गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट वंस अगेन। गनर शॉट में आपको दोबारा स्वागत है। आज हम समुद्र की ओर जा रहे हैं, मैरीटाइम इश्यूज, राइट। आपने अभी तक हमारा जो चाइना चैलेंज हमने शुरू किया है उसमें 6 एपिसोड हो गए जो आपके दृश्य में है और बहुत रोमांचक रहे हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव रहे हैं और हमारे दिमाग के दरवाजा उनको खोल दिया है और नए विचार आने लगे हैं चाइना के बारे में, राइट। मैं हर बार यही बताता रहता हूँ, पाकिस्तान के बारे में तो हर इंडियन नागरिक एक एक्सपर्ट है, पर चाइना के ऊपर एक्सपर्ट होना जो हमारा आगे का प्रतिद्वंदी है वो इम्पोर्टेंट है और इसीलिए चाइना चैलेंज चलाया। ये आज हम 7वें चैलेंज कर रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट है मल्टी डोमेन मैरीटाइम ऑपरेशंस, राइट। ये मल्टी डोमेन मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए मेरे साथ हैं एडमिरल श्रीकंडे। गुड इवनिंग एडमिरल, वेलकम टू द शो। Good evening, sir, and good evening. Hello to your audience. एंड राइट, इससे पहले कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, एडमिरल श्रीकंडे जो हैं वो नेवी से रिटायर हुए हैं, इसीलिए तो एडमिरल हैं और माने हुए एडमिरल हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि एरी गैरी एडमिरल। ये रिटायरमेंट के बाद आजकल हर वॉर कॉलेज में जाके हमारे अगला पीढ़ी, फौजी का पीढ़ी को पढ़ाते हैं मैरीटाइम ऑपरेशंस के बारे में। और तो और ये लेखक हैं। जब हम दोनों का रिटायरमेंट साथ ही हुआ था, हम दोनों ने हमारा लिखवाई एक वो भारत शक्ति में साथ साथ शुरू किया और हम अपना एक्सचेंज करते थे नोट्स कि किस तरीके से लिखना है क्या वगैरह। और आजकल वो कभी कभी ट्रैक टू डायलॉग में भी शामिल हो जाते हैं, राइट। आज जो विषय है उसके बारे में बात करने के लिए इनसे बढ़िया आदमी मेरे को नहीं मिला, राइट। और ये पहली बार कोई नेवल ऑफिसर आके गनर शॉट के ऊपर बोल रहा है, ये हमारे लिए फकर की बात है। एडमिरल, यू कैन say a few words about the China and its maritime operations before we dug into the subject, or your opening remarks, whatever you want. Thank you very much. दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूं, जैसे जनरल शंकर ने बताया कि मल्टी डोमेन स्ट्रेटजी और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के बारे में। मल्टी डोमेन यानी अलग अलग डोमेन में किस तरह से चाइना ने अपनी रणनीति बनाई है ऑपरेशंस के लिए, उसके बारे में। तो मल्टी डोमेन स्ट्रेटजी क्या होती है ये मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। अक्सर स्टेट क्राफ्ट यानी जो कोई भी देश करता है, जैसे कौटिल्य ने लिखा हुआ है, बाकी कई लोगों ने पश्चिम संस्कृति में भी लिखा हुआ है। स्टेट क्राफ्ट के बेसिकली 4 अंग होते हैं: डिप्लोमेसी, मिलिट्री, इकोनॉमिक और इंफॉर्मेशनल। और उसको कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में डाइम, DIME, डाइम, याद रखने के लिए इजी रहता है। तो डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक्स के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ स्ट्रेटजी हैं, लाइंस ऑफ ऑपरेशंस हैं। आप लोग देखते हैं कि दुनिया में लड़ाई के समय भी, लड़ाई के पहले भी इकोनॉमिक सैंक्शंस के वजह के जोर से या इकोनॉमिक सैंक्शंस का इम्पैक्ट कम करने के लिए देश क्या क्या करते रहते हैं। दूसरी बात है कि इंफॉर्मेशन या साइबर ऑपरेशन, मुझे मालूम है कि इसी सीरीज में साइबर ऑपरेशंस के बारे में, साइबर स्पेस के बारे में प्रोग्राम हुआ है। तो इंफॉर्मेशन या साइबर ऑपरेशंस वो भी और एक डायमेंशन है। और ऑफ कोर्स मिलिट्री के बारे में आज मैं मिलिट्री के बारे में फोकस करना चाहता हूं कि मिलिट्री में हम कह सकते हैं कि 5 डायमेंशंस हैं जो रणनीति में शामिल होती है। वो है एयर, लैंड, सी, साइबर या इंफॉर्मेशन और स्पेस। स्पेस भी बहुत मायने रखता है और उसका जो We'll just come to that. I'll put the thing in perspective. Okay. Or yeah.
जो एडमिरल श्रीखंडे साहब बता रहे थे, मैं उसको थोड़ा आपको इन लार्जर पिक्चर में बताना चाहता हूँ, राइट। ये क्या है, ये जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का मूल सिद्धांत जो है, एक किताब है जो इसको बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, यानी कि लड़ाई में कुछ भी कर सकते हो। ये दो पीएलए के कर्नल्स ने लिखा था, क्यो लियांग और वैंग जियांग शिवी, राइट। और ये क्यो लियांग जो है ना, आजकल वो उनका एकेडमी में पढ़ाता है, उनका वॉर कॉलेज में। उसके बाद ये बात शुरू हुआ है मल्टी डोमेन वॉरफेयर। मल्टी डोमेन वॉरफेयर ये है कि बहुत डोमेन्स होते हैं जिससे हम आप लड़ाई कर सकते हैं, और ये जो है जरूरी नहीं है कि वॉर में हो या पीस में हो। ये मल्टी डोमेन वॉरफेयर वॉर और पीस दोनों में चलता है, दिन रात चलता है। इसके एक्टर्स हो सकते हैं स्टेट, नॉन स्टेट, स्टेट स्पॉन्सर्ड, एनजीओस, एमएनसी, ये सब इस मल्टी डोमेन वॉरफेयर में शामिल हो जाते हैं। और तरीका और जो मीन्स हैं, वो जो राइट में एक बॉक्स में दिया हुआ है, वो हार्ड और सॉफ्ट पावर हो सकता है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मीन्स भी हो सकते हैं। अगर ऊपर से आप देखेंगे तो मल्टी डोमेन वॉरफेयर में एयर, लैंड और सी, जिसके बारे में एडमिरल साहब ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, वो बेसिक डोमेन है जिससे लड़ाई लड़ा जाता है। उसके बाद आजकल स्पेस, साइबर स्पेस, न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मायना बहुत हो गया है। उसके साथ साथ ट्रेडिशनल डोमेन्स हैं, एनर्जी, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी, जो इन्होंने बोला था डाइन, राइट, डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री और इकोनॉमिक्स। और आजकल जो खास करके जो चाइना प्रैक्टिस करता है, वो तीन, इसको बोलते हैं थ्री वॉरफेयर स्ट्रेटजी, जो एलओ में है, वो इन्फ्लुएंस, लीगल और पब्लिक ओपिनियन। और तकरीबन अगर ये तीनों मिला दोगे तो वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उसी में से निकल आता है। और लास्ट जो आजकल अभी ये जो कोविड के दौरान निकला है, वो हेल्थ। हेल्थ तो भी वो डोमेन है जिससे देश एक दूसरे से वॉरफेयर चलाते हैं, लड़ते हैं, राइट। पर आज जैसे एडमिरल साहब ने बताया, वो मैरिटाइम ऑपरेशंस में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और मल्टी डोमेन वॉरफेयर कैसे चलता है, राइट। बेसिकली सी बेस्ड। ये नहीं कि सी बेस्ड का मतलब सिर्फ आप समुद्र में जाके मल्टी डोमेन करो, वो उसका लैंड के साथ भी कनेक्ट है, एयर के साथ भी कनेक्ट है, स्पेस के साथ भी कनेक्ट है, और बाकी जगहों के साथ भी कनेक्ट है। और इसी ये कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, और ये मैं बताना चाहता हूं कि आजकल जो मैरिटाइम ऑपरेशंस के ऊपर जो जोर है, राइट, और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि चाइना इज एक्सपेंडिंग इट्स फ्लीट। ये बताया गया ऑलरेडी कि चाइना के पास अमेरिका से भी ज्यादा नाव है, एंड इट वांट्स टू बिकम अ ग्रेट मैरीटाइम पावर। अभी तक वो तकरीबन चाइना जो है वो साउथ चाइना सी और वेस्टर्न पैसिफिक में सीमित है, पर उनका इरादा है कि इंडियन ओशन रीजन में आ जाए। एक जिस दिन वो इंडियन ओशन रीजन में आ जाएंगे, हमारा नेवी के साथ टक्कर होगा। इसीलिए हमें पता होना चाहिए चाइना किस तरीके से वो अपना मैरिटाइम ऑपरेशंस करता है और मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट में करता है। इसी के बारे में हमें जिक्र करने के लिए, सब कुछ बताने के लिए एडमिरल श्रीखंडे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू एडमिरल, जस्ट टेक इट ऑन। थैंक यू। मल्टी डायमेंशन जो स्ट्रेटेजी है, मैरीटाइम स्ट्रेटेजी चाइना की, उसके लिए दो मेन अंग बोल सकते हैं। एक तो फोर्ट यानी किला, और फ्लीट। फ्लीट यानी कि जो कुछ भी समुंदर में है या समुंदर के ऊपर है, समुंदर के नीचे है। लेकिन जो मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजी है, चाइना हैज क्राफ्टेड इट वेरी वेल इन द लास्ट फ्यू इयर्स। उन्होंने काफी इस पे फोकस किया हुआ है कि एयर, स्पेस, दैट मीन्स लैंड बेस्ड एयर पावर, स्पेस एंड साइबर और मिसाइल पावर, एंड ऑफ कोर्स इट्स एक्सपेडिशनरी कैपेबिलिटी, जो उनके मरीन्स हैं या आर्मी है, कैसे कैसे सब मिलजुल के आते हैं और क्या रणनीति बनाते हैं। तो ये चाइना के लिए अभी तक फोकस था, जिसको चाइनीज में एक्टिव डिफेंस कहते हैं, लेकिन वेस्टर्न नेशन उसको कभी कभी A2AD कहते हैं, एंटी एक्सेस एरिया डिनायल स्ट्रेटेजी,
और A2AD ऑपरेशन जो चाइना की हैं। सो इसके लिए आपको जैसे मालूम होगा कि चाइना के लिए फर्स्ट आइलैंड चेन और सेकंड आइलैंड चेन का मामला है। चाइना के लिए फर्स्ट आइलैंड चेन में जापान, ताइवान ये सब आ जाते हैं, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, और फिलीपींस तक आ जाता है। और सेकंड आइलैंड चेन में गुआम और बिस्मार्क आर्चिपेलागो ये सब आते हैं, उसमें मरियानास वगैरह आते हैं। तो चाइना की जो मैरीटाइम ज्योग्राफी है काफी अड़ी हुई है, क्योंकि एक साइड में जापान है, कोरिया है, ताइवान है, फिलीपींस है, और साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी है। तो काफी बड़े समुंदर, मैप में हमें छोटे लगते होंगे, है बड़े समुंदर, लेकिन ईस्ट चाइना सी ज्यादातर उसकी डेप्थ कम है, गहराई कम है। साउथ चाइना सी में भी काफी एरिया हैं जो कम गहराई के हैं, लेकिन बहुत सारे एरिया हैं जो काफी गहराई के भी हैं। लेकिन ये बड़े बड़े समुंदर हैं, उसमें शिपिंग बहुत है, और अहम रखता है चाइना के लिए, पूरी दुनिया के लिए। चाइना के लिए, चाइना की जो स्ट्रेटेजी है एक्टिव डिफेंस की और लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं, दे वांट टू टेक ओवर और हैव एक्सेस थ्रू द फर्स्ट आइलैंड चेन। दैट मींस जापान को दबा के रखना, ताइवान को इनकॉर्पोरेट करना वन चाइना में, और फिलीपींस और कोरिया पे भी डोमिनेट करना, साउथ कोरिया पे डोमिनेट करने की उनकी स्ट्रेटेजी है। तो उसके लिए उन्होंने काफी परिश्रम किए हैं, मैं कह सकता हूँ, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए। इसमें आप सोच सकते हैं कि जैसे हाथ की 5 उंगलियां हैं, 5 फिंगर्स ऑफ आवर हैंड, वन इज एयर, लैंड, सी, एंड द न्यूअर डायमेंशंस यू कैन से स्पेस एंड साइबर। ये 5 अलग अलग तरह के से भी फिंगर्स हम यूज कर सकते हैं, या इनको कंबाइन करके मुट्ठी भी बना सकते हैं। तो इसके जरिए उन्होंने जो है अपना पूरा एक्टिव डिफेंस किया हुआ है। उसके लिए शोर बेस्ड रेडार्स हैं, ओवर द होराइजन रेडार्स हैं पूरे, और स्पेशली स्पेस में उन्होंने बहुत सारे सैटेलाइट्स लगाए हैं, और स्पेस बेस्ड जो सर्वेलेंस है, इंटेलिजेंस एंड रिकॉनिसेंस, पूरे ट्रैकिंग करने के लिए, डिटेक्शन के लिए उन्होंने काफी कुछ उसमें एफर्ट डाला है पिछले स्पेशली 10-15 सालों में। लेकिन स्पेशली पिछले 2-3 सालों में उन्होंने बहुत कोशिश करी है, और उसका फल देख रहे हैं, इन द सेंस द अमेरिकन्स आर वेरी वरीड अबाउट चाइनीज A2AD, कि उनके जहाज वहां कैसे रहेंगे, क्योंकि जो चाइनीज एक्टिव डिफेंस है, काफी काफी उनके बड़े नेवी में, जैसे जनरल शंकर साहब ने बताया, उनकी नेवी बहुत बड़ी है, और बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन उनके शोर बेस जो अदर डायमेंशन हैं, that also they are improving a lot, and they will be able to bring them together. So ये जो पूरा उन्होंने आर्किटेक्चर किया हुआ एक्टिव डिफेंस का, या A2AD या मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए, इसके वजह से दूसरे देश भी काफी चिंतित हैं। लेकिन दूसरे देश भी उसको काउंटर करने के लिए अपने आप मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और मल्टी डोमेन स्ट्रेटेजी की ओर गौर दे रहे हैं, और हम भी इंडिया में वही कर रहे हैं, काफी काफी तरीके से। सो the strategies to counter multi-domain strategies and multi-domain operations logically have to be multi-domain strategies and operations on the part of those with whom China can prove to be an adversary. या एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो एडमिरल साहब ने बताया, जिस तरीके से चाइना अपना जोर लगा रहा है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए, और खास करके मैरिटाइम ओरिएंटेशन करने के लिए, और खास करके ये फर्स्ट आइलैंड चेन के ऊपर हावी होकर उसको पकड़ने के लिए, उसी तरीके से वेस्टर्न पैसिफिक में, खास करके वेस्टर्न पैसिफिक में अगर आप देखिए, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया, वो भी अपना मैरिटाइम और मल्टी डोमेन कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको खतरा महसूस हो रहा है। खास करके ये जो ताइवान के साथ जो किस्से हुए हैं 2 बार फायरिंग वगैरह और ब्लॉकेड वगैरह के बाद, वो अपना खतरा महसूस कर रहे हैं कि भाई अगर उनको होता है तो हमारे ऊपर भी कोलेटरल डैमेज हो सकता है, तो हमारा बचाव के लिए ये करना है। तो इसीलिए ये जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो चाइना कर रहा है, उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Sorry for the disturbance, please carry on. No, that's absolutely what you said is right.
जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस या मल्टी डोमेन आर्किटेक्चर चाइना खड़ा कर रहा है वेस्टर्न पैसिफिक के लिए, फर्स्ट आइलैंड चेन, सेकंड आइलैंड चेन में काबू पाने के लिए, उसको द सेम आर्किटेक्चर और aspects of that architecture can impact on the Indian Ocean region also. उनके जो मिसाइल आर्क्स हैं, एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग आर्क्स हैं, उसके लिए इंडियन ओशन रीजन में भी उन्होंने वही सब किया हुआ है, जैसा कि आप स्लाइड पे पिक्चर पे देख रहे हैं। तो इसमें पूरा जो इंडियन ओशन का करीब करीब जो अफ्रीका से आर्क आता है, डीगो गार्सिया और ऑस्ट्रेलिया तक आप देख रहे हैं, उनके जो एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज है, बड़े बड़े मिसाइल्स की, एयरक्राफ्ट की रेंज है। बट व्हाट चाइनीज हैव आल्सो डन इज ट्राई टू क्रिएट देयर ओन bases और places as they say in the Indian Ocean region. ये हो सकता है जिबूती, ग्वादर पाकिस्तान में, और कंबोडिया में भी कोशिश कर रहे हैं, और उनके भी वो अपनी मैरीटाइम डिप्लोमेसी से, मिलिट्री डिप्लोमेसी, खुद का जो स्टेट क्राफ्ट है, इकोनॉमिक जो उनकी शक्ति है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, ताकि वो अपने एसेट्स वहां बेस कर सकें, वहां से डिप्लॉय कर सकें, और एयरक्राफ्ट जो हैं, उनके जो लैंड बेसिस हैं उनके खुद के प्रोविंसेस में, हिमालयस की उस तरफ, वो ओवरफ्लाइट करके इंडियन ओशन पे काफी इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें भी विचार करना चाहिए। और इंडिया में आप देख रहे हैं कि जो पेनिनसुलर इंडिया है, उस पे एयर बेसिस आ रहे हैं, हमारी तरफ से भी लैंड बेस्ड मिसाइल्स बढ़ रहे हैं, नेवी की शक्ति बढ़ रही है, और स्पेशली हम अंडमान निकोबार चेन पे काफी इंप्रूवमेंट्स ला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग चालू है, और हमारी रणनीति भी इवॉल्व कर रही है। सो वी हैव टू आल्सो, एज आई मेंशन्ड, look at multi-dimensional strategy and how to improve that, and that is the focus that has to remain and become stronger and stronger. We have to think that the Andaman Nicobar islands and the Lakshadweep island are our own island chains, and they are also meant for defensive postures, offensive postures, as required to protect and further India's interests and the interests of all the friends that we have in the Indo-Pacific and especially Indian Ocean region. So भारत की जो रणनीति है वो भी आगे बढ़ रही है, और इसके वजह से चाइना के लिए भी चुनौतियां खड़ी है, और ये चुनौतियां हम फेस करते रहेंगे। मैं एक चीज बताना चाहता हूं जो एडमिरल साहब ने बताया, और एक बहुत ही अहम चीज उन्होंने बताया अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में, राइट? आई जस्ट वांट टू रीइंफोर्स इट। आजकल जैसे हम सबको पता है कि चाइना का जो पूरा फोकस है कि वो अपना फर्स्ट आइलैंड चेन को पाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट आइलैंड चेन जब तक उसके काबू में नहीं है, चाइना कैन नॉट बी आउटबाउंड इनटू द फार ओशंस, राइट? जिस तरीके से उनको ये पकड़ना जरूरी है, उसी तरीके से अगर मैं ये नक्शा दिखाऊं, राइट, अगर इंडियन ओशन में आना है, उनको अंडमान निकोबार को पार करना है, और वो एक अंडमान निकोबार चेन है जो हमारे हाथ में है। अगर हम उसके ऊपर अच्छा जोर लगाएं और उसको ताकतवर बनाएं, तो चाइना को इधर अंदर आके इंडियन ओशन रीजन में घुस के अपना नेवी के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। ये पॉइंट उन्होंने एडमिरल साहब ने बताया पहले, मैं सिर्फ उसको रीइंफोर्स कर रहा हूँ, राइट? तो अभी हम देखते हैं वो आगे क्या मल्टी डोमेन का क्या क्या खूबियां हैं वो बताएंगे। या ओवर टू यू एडमिरल। हाँ, थैंक यू सर। मल्टी डोमेन में जो चाइना के पास हैं, जैसे मैंने बताया, उनके पास काफी तरह के शोर बेस्ड एयरक्राफ्ट हैं जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर सकते हैं, लंबी दूरी के क्रूज मिसाइल्स हैं उनके पास, बॉम्ब्स हैं अलग अलग तरीके के, और ये जो एयरक्राफ्ट हैं उनमें कोई कोई एयरक्राफ्ट पीएलए एयरफोर्स के पास हैं, और बाकी सारे बड़े एयरक्राफ्ट भी पीएलए नेवल एविएशन के पास हैं। सो ये दो एविएशन के
instruments hain. The other instruments that they have are, of course, as I mentioned, a whole range of shore-based missiles, which could be ballistic missiles, cruise missiles that are launched from trucks and from concealed locations along the coast and from deeper inside. इनके जो missiles हैं, anti-ship ballistic missiles, they are a source of great concern for Americans because many of their ships might be vulnerable, or they might have to be able to still operate, perhaps operate from greater distances. So if they are operating from greater distances to the Chinese coast and the Chinese littoral, जो first island chain और China के coast के बीच में है, तो उनका भी effectiveness उतना ही कम होगा. Vulnerability कम होगी, लेकिन effectiveness भी कम होगा, जितना दूर से वो लड़ाई करेंगे. तो ये सब चीजों के बारे में अमेरिकन्स, जापानीज काफी सोच रहे हैं. तीसरी बात है कि जैसे मैंने बताया था, चाइना हैज अ लॉट ऑफ स्पेस बेस्ड एसेट्स. उनके पास लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स बहुत सारे हैं, स्वॉर्म सैटेलाइट्स, which means a group of many small satellites that they can launch, which will orbit for shorter periods, but which will provide a much greater density of tracking. वो हैं. UAVs अलग अलग तरह के बना रहे हैं, हाइपरसोनिक वेपन्स बना रहे हैं, हाइपरसोनिक प्लेन्स बना रहे हैं. तो इस तरह से उन्होंने काफी कुछ किया हुआ है. उसके बजाय चाइना के पास एक्सपेडिशनरी कैपेबिलिटीज काफी है. मतलब अपनी आर्मी को और जो चाइनीज मरीन्स हैं, जो नेवी के साथ हैं, उनकी भी जो शिप्स हैं, एक्सपेडिशनरी कैपेबिलिटीज है, एयर ट्रांसपोर्ट, पैराट्रूप ड्रॉप्स, ये सब भी बढ़ रहा है. काफी उनके लाखों की संख्या में है उनके अभी मरीन्स, 1 लाख के से ऊपर है मरीन्स. और उसी तरह से जो एम्फीबियस रेडी सोल्जर्स हैं उनके पीपल्स लिबरेशन आर्मी में, वो भी काफी संख्या में है. और इनका फोकस ऑफ कोर्स है ताइवान पर. हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये अलग बात है, लेकिन उनके पास वो ट्रेनिंग करते रहते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज कर रहे हैं. कोई बात उनके लिए भी सहज नहीं होगी, लेकिन कोशिश उनकी तरफ से जारी है. और उनको जो चेक करने के लिए या काउंटर मेजर्स के लिए जापानीज, ताइवानीज, अमेरिकन और उनके बाकी सब एलाइज उधर हैं, काफी कुछ मेहनत कर रहे हैं अपनी वो स्ट्रेटेजीज चेंज करने के लिए. और उसमें यूएस आर्मी जो है जापान में, ओकिनावा में, वो लोग भी अपने पास एंटी शिप मिसाइल्स ला रहे हैं. यूएस मरीन को और एंटी शिप मिसाइल्स खरीद रहा है. और किसी तरह से मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटीज वो भी बढ़ा रहे हैं. तो मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजीज मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशंस और मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजीज को काउंटर करने के लिए जो दूसरी साइड्स हैं, हम हैं या अमेरिकन हैं या जापानीज हैं, सब उसी तरह से मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजीज पे सोच रहे हैं. जो आपको जनरल शंकर साहब ने दिखाया था पूरा सर्कल इतने डायमेंशंस में, उसके बारे में सबने सोचना है और सोच भी रहे हैं. राइट. इनका जो खास चीज ये मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशंस में खास नया चीज क्या है चाइना का, जो एडमिरल साहब ने बताया, मैं उसको थोड़ा विस्तार में बताना चाहता हूँ. स्पेस. जिस तरीके से चाइना स्पेस को मिलिटराइज कर रहा है, स्पेस को इस्तेमाल कर रहा है, राइट. ये बात जनरल नरसिम्हन साहब ने भी बताया पहले कर्टन रेजर में. ये बात जनरल राज शुक्ला ने भी बताया कि जिस तरीके से वो स्पेस को मिलिटराइज कर रहे हैं, वो एक खतरनाक चीज है. यहां तक वो चाहते हैं कि स्पेस को भी न्यूक्लियराइज करें, राइट. उसका अलग पहलू है जो हम जब न्यूक्लियर इश्यूज के बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे. पर a major part of multi-dimensional operations, maritime or otherwise, are space-based operations, right. जो सेकंड पॉइंट जो मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मतलब विस्तार में थोड़ा बताना चाहता हूँ, इस एक्सपीडिशनरी कैपेबिलिटी ऑफ चाइना, जो श्रीकंडे साहब ने बताया. तकरीबन 2-3 साल पहले तक ये माना जाता था कि चाइना के पास एक्सपीडिशनरी कैपेबिलिटी नहीं है. एक्सपीडिशनरी कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि दूर दराज इलाकों में जाके अपना फौज को डिप्लॉय करके लड़ना, वो कैपेबिलिटी कम माना जाता था. पर आजकल उसके ऊपर चाइना जोर दे रहे हैं. क्यों जोर दे रहा है?
इसीलिए जो उन्होंने बताया, जो जितने ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जो खास करके जो ब्लैक में जो दिखाई दे रहे हैं, वो सब चाइना के आउटबाउंड बेसिस बन रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द ग्वादर का बेस भी बन रहा है। जब ये बेसिस इनके पास दूर दराज इलाकों में एस्टेब्लिश हो जाएंगे और ये एक्सपीडिशनरी फोर्स वहां तक ले जाने का इनका क्षमता आ जाएगा, तब जाके ये मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटी और खतरनाक हो जाएगा। राइट, ये दो चीजें हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीकंडे को, आई मीन सॉरी एडमिरल को, if you could put a little explain to us about their cyber capabilities, because I think cyber information, because that I think is a very important part of their dime and their multi-domain operations in sea. I think in the cyber world or information world, China has put a lot of effort. एक तो उनके जो लोग हैं जो साइबर ऑपरेशंस के लिए काम कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, हैकर्स हैं, जो उन्होंने टेक्निकल कैपेबिलिटीज बनाई हैं, ये काफी चिंताजनक है पूरे दुनिया के लिए। दूसरी बात है कि चाइना का जो रोल है ग्लोबल इंटरनेट केबल्स में, इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, इन टर्म्स ऑफ लेइंग कैपेसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, ये काफी आगे बढ़ चुकी है पश्चिमी देशों के कंपैरिजन में। और ये भी हमें चिंता करने की जरूरत, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि जो डेटा सॉवरेंटी है वो उसके बारे में क्या क्या रिस्क हैं हमारे जैसे देश को, या इवन यूनाइटेड स्टेट्स को, जापान को। ऑफ कोर्स इंटरनेट केबल आजकल लोग कहते हैं कि काट सकते हैं, लेकिन काटने से खुद को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन उसके लिए डाइवर्जनरी टैक्टिक्स होते हैं, स्पेस बेस्ड डेटा एबिलिटी होती है। तो ये सब साइबर और स्पेस के बारे में जोड़ के चाइना ने काफी कुछ उसमें पसीना लगाया कह सकते हैं। और जो उनके जो टेक्नोलॉजिकल रिसर्च चल रहा है इसके बारे में, जितने लोग उन्होंने डिप्लॉय किए हैं, ट्रेन कर रहे हैं, यंग लोग हैं, इमेजिनेशन के साथ कर रहे हैं कि कैसे कैसे साइबर अटैक्स कर सकेंगे। साइबर ऑफेंसिव के लिए और साइबर डिफेंसिव के लिए भी चाइना के लिए खुद के लिए जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उसके बारे में पूरे दुनिया को और गौर से देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और उसके लिए अपने डिफेंसेस मजबूत करने पड़ेंगे, ताकि जो हमारी भी जो डिपेंडेंस है साइबर स्पेस के लिए, साइबर नेशनल साइबर एक्टिविटीज के लिए, इसके लिए इसको सेफगार्ड करने के लिए बहुत कुछ करना है हमने। और आई थिंक जो भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं इसमें, दे आर डूइंग देयर बिट, यू नो, we have to keep working on it. Right. So what Admiral Shrikande has pointed out, data sovereignty. We had Pavitran Rajan speaking to us about data sovereignty and cyber sovereignty just 2 days back. Right? He explained to us how cyber dependent India is on outside agencies. So उसके लिए आत्मनिर्भरता वगैरह will carry on. But जहां तक चाइना का संबंध है, it's not only that China has made a lot of strides in the cyber world, they're now using AI in big way. They're betting big on AI. अगर आप इनका जो चाइना का जो वॉरफेयर स्ट्रेटजी देखेंगे, राइट, इनका जो मूल ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज और कॉन्सेप्चुअल डॉक्ट्रिन्स जो है, वो सब आते हैं फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द सीसीपी। और इस पिछले 10 साल से, एवर सिंस शी जिनपिंग हैज कम इनटू पावर, इन्होंने शुरू किया था फ्रॉम एज अ इंफॉर्मेटिव बैटलफील्ड। आजकल वो बोल रहे हैं इंटेलिजेंटाइज बैटलफील्ड। व्हाट इज एन इंटेलिजेंटाइज बैटलफील्ड? Intelligent-based battlefield is something where AI and cyber is used in a big manner, जिससे battlefield transparency बिल्कुल हो जाए, और इनका and they can mask the opponent's battle and the opponent's capability so that they have complete dominance over the battlefield.
एंड ये जो information dominance, which they say, and intelligence dominance, intelligentized dominance, what they are trying, ये बहुत खतरे की बात है और उसके लिए हमें थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा. But let me ask Admiral Shrikande. We've known that they have this capability of multi-domain capability, and they have the biggest fleet, everything. What do you think is the capability today of the PLA Navy to execute its ops, whether in the first island chain or beyond in the second island chain, and then beyond into the Indian Ocean region? How do you think they'll evolve in the future? I'll talk about their capabilities. And today, the very essence of multidimensional sea power is that the Navy is one of the instruments, not everywhere the primary instrument also. That sea power could come from cyberspace, shore-based assets, whether missiles, aircraft, or expeditionary capabilities. That's the whole purpose, how they have created ascendancy for themselves within the Western Pacific using multidimensional operations and multidimensional thinking. The Navy, of course, is expanding. They have certain vulnerabilities in terms of perhaps anti-submarine warfare, in terms of expertise in operating submarines, some degree of expertise in operating aircraft carriers. But one thing that we should probably think about is that, like many other navies have in the past, or countries have in the past, like Germany or Japan in their own decades after the First World War or before the First World War, they are also quick learners. And therefore, they will also try and learn very fast. And in fact, the progress that they have made in cyber and space is also can be attributed to their determination to try and have the upper hand in the Western Pacific with respect to a superpower like the United States. So I think their sea power, their naval power is quite strong. Where their vulnerabilities might be in the Indian Ocean region are because of the distances, because of the constraints of geography that they have, having to come through Philippines or Indonesian gaps or the Malacca Strait and then into the Indian Ocean region. And to be able to overcome that part, they will probably think of greater deployments and greater basing perhaps around the Indian Ocean, and exactly by not depending so much on the PLA Navy but on the other four fingers of multidimensional operations, that is air, missile, space, and cyber, and use it over the Indian Ocean region a lot like they have replicated over the Western Pacific. So the PLA Navy is building up its capabilities. उनमें थोड़ी कमियां भी हैं, लेकिन वो इनको ओवरकम करने की कोशिश करते रहेंगे. और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इंडिया, our friends everywhere, keep watching China very very carefully. सतर्क रहना बहुत जरूरी है. Right. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने बताया, जो मैं थोड़ा अगेन हाईलाइट करना चाहता हूं, वो ये है कि अक्सर माना जाता है कि पीएलए और पीएलए नेवी के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? और इसीलिए ये सोचा जाता है कि वो इतना इफेक्टिव नहीं हो सकते. पर इन्होंने जो बात बताया है और उन्होंने कन्वे किया है कि भाई जापान और जर्मनी का भी काश एक्सपीरियंस न था 100 साल पहले, जब या 80 साल पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ा था, पर उन्होंने बहुत जल्दी पूरे स्ट्रेटजी, नेवल स्ट्रेटजी और मैरीटाइम स्ट्रेटजी मास्टर किया और उन्होंने इस्तेमाल भी किया. और क्योंकि उनके पास उतना अंदाज नहीं था ट्रेडिशनल मैरीटाइम ऑपरेशंस, उन्होंने इनोवेट किया है, राइट? और चाइना भी वही इनोवेशन कर रहा है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है. हम सोचते हैं कि मैरीटाइम ऑपरेशंस एक तरीके से होना चाहिए, पर इनका जो बोल से मेरे को जो पता चल रहा है वो ये है कि वो चाइना का जो ऑपरेशन उस तरीके से नहीं हो सकता जिस तरीके हम सोचते हैं. वो अलग तरीके से कर रहे हैं, वो अपना तरीके से कर रहे हैं, जिससे ये जो एक्सपीरियंस का जो बोलबाला है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है.
नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बताया कि एक जमाने में सिर्फ आपको मैरिटाइम पावर और डोमिनेशन के लिए आपको सिर्फ नाव की जरूरत थी, और बड़े नाव, बड़े तोप, और दूर दराज तक जाके अपना फौज को सपोर्ट करने के लिए। पर आजकल ये जो बोल रहे हैं, नहीं, आपको स्पेस की जरूरत है, और आपका मिसाइल्स की जरूरत है, आपको एयरफोर्स की जरूरत है, आपका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी जरूरत है, और उसके साथ जो एक और है डी, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी की भी जरूरत है। अगर वो सब आप जोड़ दोगे, और इकोनॉमी की भी जरूरत है, और ये सब अगर आप जोड़ दोगे तो हम देख सकते हैं कि चाइना का जो मैरिटाइम पावर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये मल्टी डोमेन अप्रोच जो है वो काफी खतरनाक है, राइट। हम ये भी सोच सकते हैं आज के दिन कि भाई चाइना का इकोनॉमी तो उतना बढ़ नहीं रहा, पर उनका जो BRI गिव्स देम द बेस, क्योंकि दूर दराज इलाकों तक और डिप्लोमेसी के साथ उनके पास पकड़ है। और ये जो बेस बनाने के चक्कर में जिबूती में या ग्वादर में और आगे जाके हम्बनटोटा में उनके पास पोर्ट है, उसको बेस बनाने के लिए कुछ अगर उनका डिप्लोमेसी काम आ गया तो बेस बन जाएगा। और हमारे साथ म्यांमार में भी ट्राई कर रहे हैं क्या क्या क्यों में, राइट। ये सब देखते हुए वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम सोच कि इंडियन ओशन रीजन में PLA नेवी हाजिर हो जाए, राइट, अगर हम सतर्क ना रहे तो। योर व्यूज ऑन दिस, एडमिरल? I agree with what you're saying. We have to be careful. सतर्क रहने की जरूरत है। चाइना जरूर इंडियन ओशन रीजन में ऑपरेट करना चाहेगा, क्योंकि उनका यहाँ से काफी ट्रेड है, ट्रेड डिपेंडेंसी है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट रहेंगे भी, उनके एक्सपोर्ट्स के लिए डिपेंडेंट है। इंडियन ओशन is part of the root of its trade lines, its lifelines, and its economic progress. So it is the same for India also. So there will be certainly competition. If the competition changes to confrontation, we have to be prepared for that also. And I think whatever is required in terms of multidimensional strategies, multidimensional thinking, and multidimensional operations, I think we need to keep our thinking caps on, our powder dry, and our fists ready with all the 5 fingers individually or closed as required. Yeah. Thank you. एक और चीज मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहता हूँ। आप देखिए ये मैप के ऊपर ग्वादर और जिबूती, राइट। ग्वादर जो है हमें सबको पता है कि पाकिस्तान में ये बेस बन रहा है, राइट। नॉर्मल विचार ये है कि इसके साथ लैंड कनेक्टिविटी नहीं है, पर आज मैंने एक डॉन में एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा हुआ है कि जो कुंजरब पास है वो 24 घंटे 365 डेज इन ईयर खुला रहेगा। वो क्षमता आ रहा है उनके पास, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन वो हो जाएगा। जिस दिन वो क्षमता हो गया और कुंजरब पास जो पाकिस्तान जाओ जी के ऊपर जो है उस इलाके में है, तकरीबन जो वो काराकोरम हाईवे जो है कुंजरब के पास के थ्रू जाता है, वो अगर खुल गया बिल्कुल और कभी बंद नहीं होगा तो ग्वादर तक चाइना का एक ओवरलैंड रूट हो जाएगा। तब जाके भी एक फोर्ट बन जाएगा, जिस तरीके से पहले एडमिरल साहब ने बताया। जिस दिन वो हो जाएगा और उनका मल्टी डोमेन ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जिस तरीके से उन्होंने बताया है, तो ग्वादर और जिबूती में इनका जो बेस है, इसके जरिए हमारे इलाके में आके ये अपना ताकत दिखा सकते हैं, राइट। ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। इफ यू कुड expand a little on that, I'll be grateful. India has a very good central maritime geographic position in the Indian Ocean region. हमारा जो पेनिनसुला है, जो कॉन्टिनेंटल मास है, और जो पोर्ट्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं इंडियन ओशन रीजन में ही, ये सब हमारे लिए बहुत कीमती हैं। जैसा कि जनरल शंकर ने बताया कि अपनी मैरीटाइम ज्योग्राफी बदलने के लिए चाइना को दोस्तों की जरूरत है, प्लेसेस और बेसेस की जरूरत है, और काफी दिनों से उनकी जो मेहनत वो डाल रहे हैं डिप्लोमेसी के जरिए,
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए उसका उनको शायद अभी फायदा मिल रहा है। जिबूती में, ग्वादर में, शायद म्यांमार में, कुछ इन्फ्लुएंस हम्बन तोता में, कंबोडिया में, और उनकी जो पोर्ट ओनरशिप है मेडिटेरेनियन में, अटलांटिक में, पनामा कैनाल में, ये सब उनके लिए फायदे हो सकते हैं इसके। they can leverage their places and bases. So the advantages that India has of maritime geography are not permanent advantages. Others will try and overcome them, and we have to therefore continue with our efforts at diplomacy, our efforts to acquire more and more friends, better friends all across the Indo-Pacific and especially in the Indian Ocean region. इसके बारे में बताना चाहूंगा कि इंडिया इंडिया की जो मैरीटाइम डिप्लोमेसी है काफी डेकेड से चालू है। और आजकल जो है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स 3-4 देशों के मिलते रहे, हर साल मिलते हैं। इसके वजह से काफी कुछ मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी बढ़ा हुआ है, जिसका इफेक्ट है काउंटर टेररिज्म, काउंटर नारकोटिक्स पे, एंड इन जनरल नेशनल सिक्योरिटी फॉर ऑल कंट्रीज फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। सो हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरों के, हमारे दोस्तों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए जो मैरीटाइम डिप्लोमेसी चल रही है, मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव चल रहे हैं, इससे इंडिया को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिले हैं और मिलते रहेंगे। Yeah. Anything else you want to say before I open it up for questions in a Q&A session? No, You're fine. Right. तो आज जो है हमें विस्तार में एक लैंडस्केप मिला है, जिसमें एडमिरल श्रीखंडे हैज स्पोकन अबाउट द मल्टी डोमेन ऑपरेशंस in the maritime domain which China is about to undertake, or rather it is undertaking. This gives it a capability far in excess of the stated capability. That's the first thing. The second thing, the entire multi-domain operations are a new experience for everyone. So the advantage or disadvantage of experience, which is credited to other nations and not credited to China, gets neutralized in these new fields of multi-domain operations. The concept of operations change, right? At the same time, we have to realize that traditional operations in the sea remain difficult. Like the Admiral has brought out, their ability to carry out carrier-based operations are still suspect. In fact, if you see, their carriers have not left the South China Sea at all, or rather that first island chain. One carrier, I think, has gone halfway through to the second island chain and has come back. So that's going to take some time. It has not made any major move towards the Indian Ocean region, and that gives us time. India को time मिलता है इससे to get our act together. अगर इंडियन ओशन रीजन हमारा गढ़ है, तो उस गढ़ को किले की तरह उस किले को और मजबूत करने की जरूरत है। हमें ये भी याद होना चाहिए कि रिसेंटली चाइना हैज सेड कि इंडियन ओशन इज नॉट इंडियाज ओशन, राइट? उसको गलत साबित करना पड़ेगा हमें, और बताना पड़ेगा कि भाई ये इंडियन ओशन इंडिया का ही ओशन है, आपका ओशन नहीं है। और बार बार ये भी बताना पड़ेगा चाइना को कि भाई साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी भी चाइना का सी नहीं है, right? So we'll have to start all that. We have to start thinking differently. Our Navy has to start thinking differently. If we take into account what all Admiral Srikhande has outlined in the multi-domain capability of China is concerned. Okay. I'd like to first thank Rupa for your super sticker. Thanks a lot. We'll take on a few questions, right, which are there in the chat box. Okay. Okay. This is a general question. I'll throw it at you, Sudarshan. Parents have a critical hand in giving direction to every aspect of our life.
then why does our military not have any say in designing our education, constitution, etc.? Though it's not related to our subject, I think we'll take it on because it's got a wider implication. Yeah. I think the primary job of militaries is really to become better at preventing war by acquiring the capabilities to defeat enemies of varying types. So for that, as you might know, the armed forces spend a lot of time educating themselves also, uh, and therefore the focus of armed forces should remain in that part itself. Uh, in terms of nation building, armed forces play somewhat direct roles, but mainly they play indirect roles by keeping our borders secured, by keeping our oceans safe for Indian economic progress to be made. So the issue of trying to uh, uh, look for other roles for the armed forces is important, but the core roles are of course in our professional effectiveness as armed forces itself. How are we equipped? How do we train ourselves to use our equipment? How do we look at research and development? How do we look at atmanirbharta, indigenization, and keep getting better and better at the core tasks of defending India? Yeah, I think that's a very well brought out thing. Core task, defend India. It's to the credit of our country or politics or constitution and everything that they look upon us for many things, right? And I think we as a nation are very lucky to have such a solid armed force. And as an armed force, we are lucky to have such a good nation which is behind us. There are many nations which don't have this capability. देखिए आप सूडान में क्या हो रहा है? सूडान में दो टुकड़े लड़ रहे हैं एक दूसरे से और लोग मर रहे हैं, राइट? और हमारा बगल में देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, राइट? एक अगर आप पाकिस्तान का मॉडल देखोगे, ये अच्छी बात है कि फौज अपना काम कर रहा है और बहुत जगहों में जैसे पढ़ाना, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना वगैरह में हिस्सा नहीं ले रहा है, ठीक है? तभी हमारा देश बढ़ेगा. ओके, राइट. Tushar asks, sir, given how advanced Japan's navy is, why hasn't Indian Navy been able to get technology and military platforms from their navy instead of relying on Russia? Yeah. Japan has some problems of its constitution itself. They have certain restrictions placed by their constitution about what they can manufacture to share with other countries. What combat equipment can they give or not give? And in fact, this is a big problem that Japan needs to solve first. Yeah. And that is what they are finding it quite difficult to do, because Japanese constitution first will need to be amended, and that seems unlikely to happen because of a widespread feeling in Japan, which is against war itself. So these are the challenges for Japanese leadership. Japanese technology, of course, is very, very sophisticated, and there are a lot of areas where the Japanese Navy or the Japanese Self-Defense Force, as a whole, has some very fine equipment in terms of technology. Their submarines are excellent. Their destroyers and their avionics, their missiles, and the kind of maritime patrol aircraft they have designed and built for themselves are quite good. But they will have a problem of moving through their own constitutional restrictions to be able to open up to the possibility of Japan becoming an exporter. Currently, they cannot export almost anything to anybody. Yeah. They can sell some equipment which is used for humanitarian assistance and disaster relief, search and rescue, etc. But those are equipments that many other countries have on their own itself. The other aspect is that perhaps it is likely that Japanese equipment can be quite costly, and therefore their costs will also need to come down. That is what my understanding is. But I may be a bit wrong on this. No, I think you're I do not absolutely know. right on that. No, I think you're absolutely right on that. Or there's a historical fact which I would like to add on.
देखिए, रशिया के साथ जो हमारा our linkages with Russia go back to 71 and around that time, जब किसी और ने हमें कोई हथियार नहीं दिया या मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं दिया, रशिया ने सबको दिया, हम बिकॉज ऑफ फॉर जियोपॉलिटिकल रीजंस। वो परंपरा चला आया है, ये सिर्फ नेवी में ही नहीं, आर्मी और एयरफोर्स में भी we have a strong Russian connect. And like what Admiral Shrikande said, it was available to us and at very cheap rates. And we are now used to it. Okay. On the other hand, Japan, because of their constitutional provisions, could never sell anything and we could never take anything. Right. So that is the factual position. The one point which I want to highlight is, you see, when you buy a ship or an aircraft or a tank or anything, it stays with you for about 30, 40 years. You don't just take the tank off or a ship off and get a new ship just because you change friends. So that is why you have to continue with Russian equipment for a long time. Right? That's the first thing. And the second thing is, whatever we are doing with Japan, okay, they have to come over the constitutional issues which are very problematic before they can think of exports. In fact, they are not even able to arm themselves for a credible threat against China. That's the status today, right? Only when they can get over that, this thing. But having said that, I would like to add that of late, Japan, for the first time, has started doing some air exercises with us. They've started participating in quad-based exercises, which is a forward way of looking at it. And I'm sure through the quad medium and all that, there is something happening which could change in the future. So we leave it at that, right? Okay. This is again a general question, but I think we worth taking on. They said democracy has three pillars: executive, judiciary, and legislature. Why is military not considered as a fourth pillar and have equal independent stake in designing our education, constitution, etc.? I think he's given the answer earlier, but yeah, if you could just talk on the fourth pillar, don't talk about the education and constitution. I think the very fact of a democracy is that the military, the armed forces, are meant for defending that democracy against external threats. That is the main task of the armed forces. Armed forces in a democracy or in any country, when they get involved in running that country, do not bring any credit to that country eventually. Uh, uh, we have had in the neighborhood many military governments who have intervened, and it has always caused difficulties and ruin for that country and economy. So the armed forces have to remain in their constitutional role. We have no executive role, no legislative role, and no judicial involvement in the affairs of the nation. Democracy is of the people, by the people, for the people, in its own way, interpreted in every democracy in this world. So the armed forces have to remain apolitical and outside these tasks. It is counterproductive to do that, and the Indian armed forces have had an exemplary record of remaining apolitical, committed to their professional tasks of defending India and not getting involved in anything else in terms of politics, etc. That's the way it should be. And that is what makes India a much stronger country and a much deeper democracy. That's my view. Think so. I think so. I completely agree with you. Karthik says, people say quantity also has its own quality. But why don't we continuously keep building submarines and ships to add numbers, iterate, improve quality? Iterate and then improve quality. Yes, of course, what you say is right. Quantity has a quality of its own in many areas of life. Uh, we probably, and like they say, along with this nice way of putting it, that quantity has a quality of its own, that very often perfect is the enemy of good enough. And both, go hand in hand.
We should be building many more submarines. Uh, we should create, that much more indigenous capability of not only building submarines, but what are called uncrewed or unmanned uh, Yeah. underwater vehicles also. A whole lot is to be done. Much more can be done, and I suppose in the decades ahead we will be doing some of those things. So whether it Yeah. is conventional submarines, unmanned, nuclear attack submarines, those are areas where certainly we need to step up our efforts. I agree with you. Yeah. It's also a matter of how much you can afford. As a Yes. nation, earlier we couldn't afford. And today we are slowly able to afford. Maybe in days to come, things will. This thing. Let's hope for a better future, Karthik. And I'm quite confident, right? While people do say quality has its own, quantity has its own quality. Quality is still prime, right? It's better to be defend yourself with what you have to the best of your capability, which is hell of a lot, right? You see, one of the problems with India is we don't know how strong we are. So I'll leave it at that. We are very strong. Don't worry. Okay. India's submarine fleet numbering only 18 compared to China's 80, how does the Indian Navy's submarine capabilities compare to China? So it's again quantity versus quality. So just go ahead. I think we have learned to operate our submarines well. Uh, every country that operates submarines, keeps their cards close to their chest, so to speak. Um, we do not know much about China. We do not know much about others, but submarines bring quite a deadly capability to any navy and bring concerns to our enemies. So anybody's submarine capabilities, its enemies have to watch closely. Uh, we have to do what we can with the amount of submarines we have and those we might build. So we have to enhance quality also of our training, continue working on that, enhance the quantity of submarines that are available slowly, depending on what the budgeting situation is, and assume that the enemy is also trying to do the same in terms of trying to build up skills as submariners for themselves. Yeah. Next question. With the acquisition so slow, such as the Scorpion submarines, and delays in the P-75I, so forth, how do we intend to clean or deterrence against, or maybe how do we intend to achieve deterrence against China? I think deterrence is is a sum of or is an impact of a whole lot of things in which submarines are only one area. Uh, it is the national resolve that somebody else can make out. It's the ability of the armed forces as a whole, the resilience of the economy, the effectiveness of diplomacy, etc. Within that larger picture, of course, uh, the prowess of the submarine fleet that India has matters a lot. And as I mentioned just a little earlier, what General Shankar also mentioned, we continue working on that. So uh, we have to we cannot take anything for granted. We have to build our submarine capability, whether Scorpions or the new projects, maybe 75I, etc. We have to keep working on that. Yeah. So, next question. What is your opinion on the small submarine being made by Pakistanis? Are they useful or are they just glorified not submarine? Okay. I what is I this? I think really don't know about it actually. in from the Second World War, many navies have used their midget submarines quite effectively to penetrate enemy harbors, to be able to launch torpedoes at ships that are in harbor or at anchorage or very close to the coast. Uh, this is something that will continue. Whether these midget submarines are manned or unmanned, etc., are matters of what technologies, communication technologies, IT, artificial intelligence, etc., can enable. And a lot of countries, I imagine, are working along these lines. And uh, 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 no, uh, midget submarines or small submarines will continue to have their importance for any country that wants to build them,
train with them and use them imaginatively. It really doesn't matter which country it is. Right. Again, sir, India should become economically and technologically strong enough to support our neighbors, thus reducing external influence over them. Your views, sir? He's talking about Bangladesh, Nepal, Bhutan, uh, Sri Lanka, Maldives. I think that's the thrust of his question. I think our economic relationship with our neighbors has a lot of scope for improvement, uh, and the more trade that increases between our within our neighborhood, the better it will be for everybody concerned, including the smaller countries around us. There is a saying that a rising tide lifts all boats. Uh, so therefore, within the SARC itself, if inter-country trade increases, it will be good, and we can see that happening, especially with our contiguous neighbor Bangladesh. Trade is increasing, connectivity is improving with our neighbors like Sri Lanka. Also, connectivity is improving through sea, through cyber, through the on the information highway, as well as through air, and the economic connections between all countries is improving. Sri Lanka is especially has been through a crisis where India has stepped up and assisted Sri Lanka in many ways. Yeah. Okay. China is trying to exert itself in the Indian Ocean region after dominating the South China Sea region. It has named places in IOR and sent spy ships as well. How are we responding? All the Navy says is we are keeping tabs. Okay, it's a matter. The Navy has not told you exactly what it is doing. Even Admiral Srikanda will not tell you completely what they're doing, but he'll give you a rough idea as to what the Navy is up to. Yeah. Trying to know what your adversaries are doing, or trying to get to know the battlefield environment in which you might operate or the adversary operates, is a time tested and a time immemorial activity of navies and armed forces. Intelligence gathering, intelligence surveillance, reconnaissance is something that all nations do, to improve their awareness of the domain and awareness of what the enemy may be doing. Uh, there are, of course, restrictions to what you can do, cannot do, depending on which zone you're operating in. So therefore, it is to be expected that others will come into the Indian Ocean region to try and build up their awareness. We have to see on a case by case basis what is to be done. What the details are, I wouldn't know. I read the same media as you do, and it's been many Yeah. years since I've retired. So Yeah, I think we leave it at that. He says, I've written a research article on the Chinese threat in the submarine cable industry and what the government is doing to prevent it. I would genuinely appreciate your feedback how to do it. Hmm. Look, I wouldn't put this question to Admiral Shrikande. The right chap to answer this is Pavitran Rajan, who came, right? And he spoke to us about data sovereignty and cyber sovereignty. So we'll take him on when you come next. I just thought I'll flag the issue and we leave it at that. Unless you want to touch it, Admiral. I think we'll. let me say that uh, data cables are themselves nothing new. the Yeah. the telegraph cables that connected the world. There was a time in the mid 19th century to the early 20th century where Britain had actually a monopoly over international telegraph cables, which went across the Atlantic into the Indian Ocean region, across the Mediterranean, and then from stations in the Middle East, right up to Karachi and Mumbai in sort of British India. uh, One of your audience might be interested in knowing that one of the first military actions, belligerent actions, that the British Navy did within a few hours of the First World War breaking out, if I'm not wrong, on the 4th of August 1914, uh, was that they had rehearsed, they had created trawlers and special ships which used to be used for laying cables, to be able to lift up cables, and with hooks and grapnels be able to cut the telegraph cables.
So within 6 hours and 12 hours respectively of the war starting, they cut two important cables that were bringing German uh, telegraph traffic from Germany into the southeastern coast of UK, from where they would be connected to other transatlantic cables. Now, what was the kind of traffic that these cables carried at that time? They carried military traffic, but they also carried banking traffic. That means financial transactions of banks were going on this. And the British had studied all this. And as I mentioned, within a few hours of the war breaking out in 1914 August, more than 110 years ago, or almost 110 years ago, they cut these cables with that special equipment. And within seconds, it seemed as if Germany's uh, interconnectivity with the globalized world as it existed then came down by almost 40 to 50%. It lost its ability to send telegraphs to various stations from where German ship would collect telegraphs and decode them. It lost a lot of banking traffic in the international banking system. And remember that Britain and Germany's economies in the First World War were very deeply interconnected. They were so deeply interconnected that at that time also there were people who were saying that war between two such globalized interconnected economies is an impossibility. And there was a very famous book written by a British author which became a bestseller in 1910, I think, called The Great Illusion by Thomas Engel, who wrote that war will be so costly for them that there is very little chance or very little sense in Germany and Britain going to war. But both sides were prepared for such an eventuality, and Germany was actively planning such a war, knowing that it will have economic impact that would be adverse, and yet they went ahead with this decision. So coming back specifically to the question of cable cutting, it is going to be nothing new if it happens in a future conflict. But the details, the technical details, technological details, and how data gets distributed and shared are very complex, and they have to be studied independently by specialists. Oh, that's a very great answer. Thanks a lot. Right. Okay, we'll take the last question. Karthik, how good is Navy's capabilities in IORs? I ask because people worry about PLA ships in IOR. I would think they are giving valuable data to us. Yeah. Well, I have written somewhere that there's actually navies cannot be prevented from operating in the international environment. No navy can be just prevented in times of peace. So therefore, you're right. What we do is we observe them, we track them, we try and learn from them. Even if a Chinese carrier battle group operates in the Indian Ocean region, we will track them, we will observe them. In short of war, when nobody's shooting at anybody, everybody can operate, but we will observe them. In times of war, all nations using multidimensional operations try and sink the other person's navy, and that is a business for which navies train, not by themselves, but today, as the whole theme of today's discussion is multidimensional operation, we have to think multidimensionally how to degrade the same multidimensional Chinese sea power across the Indian Ocean region, and in Yeah. partnership with our friends, with our allies, or not allies but friends elsewhere, how to knit it all together, like General Shankar was mentioning, perhaps through some cooperation through Quad, etc. Those are things that will have an impact depending on the actual context of a possible conflict as it might happen. But till then, the strength of the armed forces of India, the strength of Indian statecraft is meant to deter China from trying anything like this against us. Yeah, I'll just add one thing, Karthik, right? You see, many times I made this statement earlier, we don't realize our strength. We don't know how strong we are. I'll just go back to the map. You look at it, you see India. India sits in the middle of Indian Ocean. That is why India is the only country which has an ocean named after it. No other country has it. And on either extremities,
whether in Lakshadweep or in Andaman Nicobar, you hold territory, your territory. You look at the Chinese geography. He hardly has a coastline, which Admiral Srikande earlier said. And his coastline is hemmed with that first island chain. जो पहले it's got Japan, Korea at the top, Japan, uske baad Philippines, it's got Taiwan also sitting, which is hostile to it, and then Vietnam and all that, and Indonesia. It can't come out. And he also made one interesting and a very important point which you people missed out, and that is the China seas are shallow, and there are a lot of straits which he has to navigate through. Even he might have 10 aircraft carriers, but he can't deploy them. It's not at this point of time. Tomorrow we don't know what will happen. So it is not only the fact that what we have or we don't have is the important thing. Geography has given you something tremendous, and we as Indian people have utilized it well. Have faith in people like Admiral Srikande. They're training the next generation to do better than us. And we have faith in the next generation that they will take India to a better thing, what we could do in our lives. Right? That's the faith I have. Don't you agree with me, Sudarshan? Um, yes, we have you know uh, excellent armed forces. We have well trained, well motivated armed forces, and who have shown their mettle in various situations within peace and in conflict. So we are in a good place. We need Yeah. to be stronger to remain in that good place Yeah. and deter our enemies. Yeah. And if The deterrence last, collapses, to fight them to victory. yeah, I think so. I 100% in agreement. Okay. The last thing, I think Mark seems to be from Sri Lanka. He says, "Thank you so much, India, for the unfailing support extended to Sri Lanka during distress." Uh, your views, Sudarshan, and then I'll wrap it up. Uh, India and Sri Lanka are old friends. Our friendship uh, is with sort of, if each one of us just extends our arms across the Park Strait and across the the water gap uh, that separates us, we can probably shake hands. And in fact, all through Indian independence and Sri Lankan independence, we have remained close to each other. Of course, there have been problems from time to time, but which neighbors live without sort of bilateral problems? But there's nothing that we have not been able to solve together, and I think that is our relationship should continue on those terms of friendship and mutual understanding. Yeah, I think so, Mark. We'll be there. Whether China is there or not, don't worry. We'll be there with you. That's for sure, right? And we're just neighbors. Like what he said, why husband and wife fight, so neighbors can also fight once in a while, and we'll get over it, right? I think we've had a tremendous session. I'm sure the Admiral has realized that gunner shot throws a lot of tough questions. I don't know if you've had such tough questions earlier in other channels. Have you? It's been very interesting. Thank you. Very interesting. And the kind of questions which today have come up indicates the interest which the Admiral has evoked in all of you. And I thank him quite a bit for this. And I wish him all the best in his sailings. And I'm sure the Indian Navy will do us proud when the time comes, as it has always done before, right? And with this, we'll wrap up today. Thanks a lot, and Jai Thank Hind you to very all of much. you. And a special thanks to Admiral Srikande. And I'm sure after this experience, he'll come back to us on Gunner Shot once more. I hope you do. Thank you. Thanks a lot, and Jai Thank you, Hind. sir. Jai Hind.